Good morning, students. In previous session, we discussed about the derivative of implicit function. Today, we'll refer a few examples. We'll solve some example using the same method. Now, what the implicit function is, let us revise the definition. The function which is not in the form of y is equals to f of x, it's called as implicit function. Now see, you can see there are three functions on screen, and in all the three cases we are asked to find dy upon dx. See the example, find dy upon dx if x raised to 5 plus xy cube plus x square y plus y raised to 4 is equals to 4. One implicit function is given to us, and here we are asked to find dy upon dx. Now see the solution of first example. Given that x raised to 5 plus xy cube plus x square y plus y raised to 4 is equals to 4. So we can directly find its derivative. Differentiating with respect to x we have. Now see, the derivative of x raised to 5 we'll find separately, plus derivative of xy cube plus derivative of x square y plus derivative of y square, which is equals to derivative of 4. There are 5 terms in this equation, so we'll find the derivative of all of them. Now see, in the next step, the derivative of x raised to 5, you can observe that x raised to 5 ka derivative is 5x raised to 4. Now, to find the derivative of xy cube, we'll have to use the product rule. हमें यहाँ पे एक्स वाई क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. व्हाट द प्रोडक्ट रूल इज, इट इज एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब प्लस y cube into derivative of x. Okay, now in the next step, in the next term, the derivative of x square y we are asked to find. So in this case also we'll have to use the product rule only, that is x square into derivative of y plus y into derivative of x square. In the last step, in the last term, we can observe that derivative of y raised to 4 is 4y cube into derivative of y, which is equals to 0 directly we have written because the derivative of constant is 0. और इसको अगर हम लोग simplify करेंगे, you can observe that in this step, in the third step, there are 3 terms which contains dy upon dx. The very first term is this one. आप लोग यहाँ पे देख सकते हो dy by dx यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है. So there are 3 terms, and there are other 3 terms which do not contain the term dy upon dx. So we'll keep ये जो dy by dx के term है ना, we'll keep them at the left hand side and shift rest of the term to the right hand side. सारे dy by dx के term जो है ना हम लोग एक साइड में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी की जो 3 terms है that is 5x raised to 4 plus y cube plus 2xy, will shift these 3 terms to the right hand side. Now at the left hand side we can take dy by dx common. dy by dx common लेने के बाद what will we get inside the bracket? We'll get x square plus 3xy square plus 4y cube inside the bracket, which is equals to, at the right hand side you can observe that we have taken minus sign common, so that we got the term inside the bracket as 5x raised to 4 plus 2xy plus y cube. Therefore dy by dx is equals to 5x raised to 4 plus 2xy minus y cube whole divided by x square plus 3xy square plus 4y cube. We have shifted the term, we have shifted this term to the right hand side, so वो denominator में चला जाएगा. So do not forget about this minus sign, because at the right hand side we have taken minus sign common, so obviously this minus sign will remain as it is, and this is the correct and final answer. What the correct answer is? dy by dx is equals to minus times 5x raised to 4 plus 2xy plus y cube divided by x square plus 3xy square plus 4y cube. Okay, now let us discuss the second example. Now one more implicit function is given to us, given that y cube plus cos xy is equals to x square minus sine of xy. We can directly start differentiating it. So differentiating with respect to x, we have
derivative of y cube plus derivative of cos of xy is equals to derivative of x square minus derivative of sin x plus y. हर एक टर्म का देर आर 4 टर्म्स इन द इक्वेशन, y क्यूब, cos xy, x square and sin of xy. सबका डेरिवेटिव विल evaluate separately. So now see what happens in the next step. The derivative of y cube is 3y square into dy by dx. cos xy का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली पहले cos xy का डेरिवेटिव हम लोग माइनस sin xy लिखेंगे into डेरिवेटिव ऑफ xy, which is equals to, here at the right hand side derivative of x square is 2x minus sin x plus y का डेरिवेटिव आएगा cos x plus y into derivative of x plus y. It means that in the next step we'll just find the derivative of xy over here using the product rule and derivative of x plus y using the addition rule. Now यहाँ पे xy का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने कहा आपको कि we'll use the product rule, that is x into derivative of y plus y into derivative of x, that is 1. Here also the derivative of x is equals to kitna 1 plus the derivative of y is dy by dx. It means that in the next step we have just evaluated the derivative of xy and derivative of x plus y. यहाँ पे we have used the product rule, whereas here we have used the addition rule. Now in the next step we'll just keep on simplifying. What will we do? We'll multiply these two terms, that is x into dy by dx plus y by this term sin xy से हम लोग अंदर के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड हेयर ऑल्सो विल मल्टीप्लाई दीज टू टर्म, दैट इज 1 प्लस डी वाई बाई डिक्स. इन दोनों को हम लोग माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन in the entire term you can see that there are two terms containing dy upon dx, three terms, 3y square into dy by dx, afterwards minus x sin xy into dy by dx, and this is the last term, that is minus cos of x plus y into dy by dx. You can see that there are three terms containing dy upon dx. So we'll take all the three terms at one side, that is at the left hand side, and we'll shift rest of the term to the right hand side. So you can observe that at the right hand side there is no term of dy upon dx. राइट हैंड साइड में dy by dx की एक भी टर्म नहीं है. लुक एट द राइट हैंड साइड. व्हाट इज देयर एट द राइट हैंड साइड? इट इज 2x प्लस y टाइम्स sin xy minus cos of xy, cos of x plus y. Now there are three terms, as I told you before, containing dy upon dx. So let us take dy upon dx common. So what will we get inside the square bracket? 3y square minus x sin xy plus cos of x plus y. So this is what we got inside the square bracket. After taking dy by dx outside common, we got three terms inside the bracket. Now in the next step we'll just shift this bracket at the right hand side, and of course we'll have to shift it in the denominator of the right hand side. So at last we got dy by dx is equals to 2x plus y times sin of xy minus cos of x plus y divided by 3y square minus x sin xy plus cos of x plus y. This is the correct and final answer. See student, the procedure is very simple. At first only we can start differentiating the function. Differentiate करने के बाद we'll just keep on finding the derivative of each and every term given in the equation. After finding the derivative, we'll collect the term containing dy by dx. We'll keep all of them at the left hand side, and the term which do not contain any term of dy by dx, we'll shift them at the right hand side. And after taking dy by dx common, we can easily find the derivative of given derivative of y with respect to x. So here we have got derivative of y with respect to as 2x plus y times sin of x y minus cos of x plus y divided by 3y square minus x times sin xy plus cos of x plus y. Have a look on the third example. In the third example, you can see that again we are given an implicit function x square plus e raised to xy is equals to y square plus log of x plus y. Okay,
Now here also we can find the derivative of each term. You can observe that there are 1 2 3 4 terms. We can find their derivative separately. सबका separately derivative find out करने के बाद we'll collect all the terms containing dy by dx at one side and rest of the term at the other side. यहाँ पे आप लोग ना थर्ड लास्ट स्टेप में देख सकते हो कि dy by dx is taken common. Look at the third last step. This is the last step. This is the second last step, and this is the third last step. You can observe that in this step, 2x plus y e raised to xy minus 1 upon x plus y. Three terms are there at the left hand side, which is equals to at the right hand side dy by dx is taken common, and cause of that we got three terms inside the bracket, 2y minus x e raised to xy plus 1 upon x plus y. Now we'll simplify this bracket, we'll simplify this left hand side also, and we'll just keep dy by dx at one side and rest of the simplified term at the right hand side. And you can observe that you can try this at home, do it properly. आप लोग अपने नोटबुक में भी ट्राई कर सकते हैं. इफ़ यू सिंप्लीफाई इट step by step, I have written the answer directly over here, but if you try to, you can try it at home. You can simplify it slowly step by step so that you will get the final answer as dy by dx is equals to 2x into the bracket x plus y plus y e raised to x y into x plus y minus 1 upon 2y into the bracket x plus y minus x e raised to xy into the bracket x plus y plus 1. This is the correct and final answer. Let us see one more example. Now see, this example is really very interesting. We have one implicit function. Implicit function is given to us, that is x raised to m into y raised to n is equals to x plus y raised to m plus n. Okay, what the implicit function is? X raised to m into y raised to n is equals to x plus y raised to m plus n. One relation is given to us. Okay, यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिया है. बाय मिस्टेक फाइंड इज प्रिंटेड ओवर हियर. यहाँ पे ना गलती से फाइंड प्रिंट हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली देयर शुड इफ होना चाहिए. इफ x raised to m into y raised to n is equals to x plus y raised to m plus n. Now you can easily observe that this is not an explicit function, it's an implicit function, but in this case we'll have to use the logarithmic differentiation. If we use the logarithmic differentiation method, if we take log of both the side, we'll get a simplified form of this function. और सिंप्लीफाई होगा ये फंक्शन ताकि इसका जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. सो लेट अस टेक द लॉग ऑफ बोथ द साइड. सी, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स वी हैव दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों का लॉग लेने के बाद यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम दैट वी हैव seen in the previous session, using all of them you can observe that we have one simplified function in front of us. See, I'll read it in the third step. M log x plus n log y is equals to m plus n into log x plus y. See, m plus n और log x plus y इनके बीच में कुछ भी नहीं लिखा. इट मीन्स दैट देर इज अ मल्टीप्लीकेशन. ये जो m plus n है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अटैच्ड, it is multiplying log of x plus y. Please don't forget this, and don't forget to write m plus n in a bracket. m plus n को ब्रैकेट में लिखना ना भूले. अगर ये आप लोग भूलोगे ना, सो एट लास्ट वाइल प्रूविंग दिस, ये dy अपॉन dx का वैल्यू y अपॉन x ये है, ये प्रूव करते समय यू विल फेस डिफिकल्टी. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू एनक्लोज m plus n in a round bracket. Okay, so using the properties of logarithm, till now we have simplified the given function as m log x plus n log y is equals to m plus n into log of x plus y. यहाँ तक हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया. Now see, differentiating with respect to x we have यहाँ पे let us keep m as it is. We know अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो we keep that constant as it is. So let us keep it as it is. What is the derivative of log x? It is, we'll just find derivative of log x plus keep this n as it is into derivative of log y. Keep m plus n as it is, just find derivative of log of x plus y. ये जो तीनों कांस्टेंट है m,
n और m प्लस n तीनों को एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया और सिंपली जो फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया. आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेटिव वी गॉट द टर्म्स एज m अपॉन x प्लस n अपॉन y इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y. यहाँ पे सिर्फ x प्लस y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बाकी है. इन द नेक्स्ट स्टेप x का डेरिवेटिव वी हैव रिटर्न 1 ओवर हियर, वेयर एज y का डेरिवेटिव वी गॉट कितना dy अपॉन dx. ओके, नाउ देखो इसी यहाँ तक ही द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज फिनिश्ड. अभी डेरिवेटिव तो फाइंड आउट किया हम लोगों ने, बट हमें ना dy अपॉन dx का वैल्यू इवेल्युएट करना है. सो ऑब्वियसली लाइक प्रीवियस एग्जांपल्स विल टेक the term containing dy upon dx at one side and rest of the term to the right hand side. हम लोग क्या करेंगे, जिस टर्म में dy upon dx है उसको एक साइड में लिखेंगे और बाकी के टर्म राइट हैंड साइड दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे. सो हियर ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि ये जो m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, इससे हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द सेकेंड टर्म इज dy अपॉन dx. सो इस टर्म से हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करते करते हम लोग यहाँ पे आने के बाद एट द लास्ट स्टेप, इन द लास्ट स्टेप यू कैन ऑब्जर्व दैट वी हैव गॉट n अपॉन y इंटू dy बाई dx माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू dy बाई dx विच इज इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन x प्लस y minus m upon x. You can observe that there are two terms at the left hand side which contains dy by dx. dy by dx के दो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और राइट हैंड साइड में एक भी टर्म ऐसा नहीं है containing dy upon dx. So in this next step obviously we'll take this dy by dx common. So let's see what happens after taking dy by dx common. Now have a look on this slide. यहाँ पे at the left hand side we have taken dy by dx common, so that in bracket we got n upon y minus m plus n upon x plus y, which is equals to at the right hand side we got m plus n divided by x plus y minus m upon x. नाउ यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे भी राइट हैंड साइड है, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है. द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू वोल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू. एट राइट हैंड साइड ऑल्सो टू सिंप्लीफाई दिस विल मल्टीप्लाई दीज टू माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू एंड वोल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू. ऐसा सिंप्लीफाई करने के बाद यू कैन ऑब्जर्व दैट एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो वी गॉट दीज टर्म्स एंड राइट हैंड साइड वी गॉट दीज टर्म्स. नाउ in this step, in the second last step, you can observe that we got nx plus ny minus my minus ny plus ny and minus ny. These two term will get cancelled. यहाँ पे जो plus ny है और यहाँ पे minus ny, these two term will get cancelled. Here also it is plus mx and here it is minus mx. तो these two will get cancelled. So बचेगा कितना, simply nx minus my divided by y into dy by dx, which is equals to nx minus my divided by x. Now can you observe this, here also in the numerator we have nx minus my, here also at right hand side we have nx minus my at the right hand side. So we can cancel these two and we can and at last we got dy upon dx is equals to y upon x. This is the required answer, है ना. यही प्रूफ करने के लिए कहा था हमें कि dy upon dx का वैल्यू कितना है, y upon x, and we are through. We have proved that derivative of y with respect to x in this particular example is y upon x. Let's see one more example. See, you can see one more implicit function on screen, and we are asked to show something. Means dy by dx, the derivative of y with respect to x, the value of dy by dx is already given. It is how much, कितना दिया हुआ है, it is x square into tan square of a divided by y square, provided that a is constant. Now have a look on this implicit function. Sec inverse of x cube plus y cube divided by x cube minus y cube, which is equals to 2a. ओके, एक इम्प्लिसिट फंक्शन हमें यहाँ पे दिया है. इस इम्प्लिसिट फंक्शन को एट फर्स्ट वी कैन सिंप्लीफाई इट एज पर आर कन्वीनियंस एंड रिक्वायरमेंट. नाउ एज इट इज गिवन, as you can observe that it is sec inverse of something.
So for our convenience, we can write it as, instead of sec inverse, we'll write cos inverse. So can we write it directly? Yes, but the term inside this bracket, we'll write it as reciprocal. As matlab, you can see that x square plus y square is in numerator, so we'll have to shift it in the denominator. And ये जो x cube minus y cube है, we'll write it in the numerator. मतलब sec inverse को cos inverse में transfer करने के बाद these two terms will get changed. Numerator will become denominator and denominator will become numerator. It means that we got cos inverse of x cube minus y cube divided by x cube plus y cube, which is equals to 2a. The term at the right hand side will remain as it is. Only the left hand side will change q because मैंने sec inverse को cos inverse लिखा है. Now, using the definition, we can write this x cube minus y cube upon x cube plus y cube as cos 2a. मतलब cos inverse of this bracket is equals to 2a can be written as bracket is equals to cos 2a. Okay. Now in the next step, shift this x cube plus y cube at the right hand side. इसको right hand side shift करेंगे. What will happen after shifting it to the right hand side? We'll get x cube minus y cube is equals to x cube cos 2a plus y cube cos 2a. Of course, cos 2a से क्या करना पड़ेगा? इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Here also we have, you can see that we have multiplied both the term by cos 2a. Cos 2a से multiply करने के बाद, now see, here we are trying to express the function in the form of y cube. यहाँ पे क्या किया है? फंक्शन को सिंप्लीफाई करके एट लास्ट उसको y क्यूब के फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया. In the beginning we got y cube is equals to 1 minus cos 2a upon 1 plus cos 2a into x cube. Look at this step. 1 minus cos 2a upon 1 plus cos 2a into x cube. Now 1 minus cos 2a का वैल्यू हमें मालूम है कितना होता है? इट इज 2 sin square a और इसका 2 cos square a. This 2 will get cancel. Sin square upon cos square is tan square a into x cube. मतलब y cube का वैल्यू हमें कितना मिला? tan square a into x cube. मतलब इस फंक्शन को, गिवन फंक्शन को हम लोगों ने, हमारे पास जितने सारे फॉर्मूले सारे अप्लाई करके, कुछ अल्जेब्रिक टेक्निक यूज करके हम लोगों ने y क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट किया. हाउ मच वी गॉट? y क्यूब वी गॉट कितना? tan square a into x क्यूब. नाउ इट इज कन्वीनियंट, इट इज ईजी फॉर अस टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव. अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना आसान हो गया. नाउ हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस y क्यूब. Now see, we have y cube is equals to tan square a into x cube. हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया. Now differentiating with respect to x, we have y cube का डेरिवेटिव is equals to, यहाँ पे tan square a is constant, so keep it as it is. And what is x cube? So it's a function, power function, so we'll have to find its derivative. tan square a को as it is लिखा और डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करेंगे हम लोग? सिर्फ x क्यूब का. लेफ्ट हैंड साइड में y क्यूब का डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड में x क्यूब का डेरिवेटिव. सो वी गॉट 3y स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई क्यूब का डेरिवेटिव, विच इज इक्वल्स टू x क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वेयर. Now just let us shift this 3y square at the right hand side. Of course this 3 will get cancelled and we got the desired answer over here. dy by dx we got kitna? X square into tan square of a divided by y square. dy by dx we got kitna? X square into tan square of a divided by y square. This is the correct and final answer. Now look at this last example. Here also you can observe that the given function is not a implicit form, it's a explicit function. You can say y is equals to root tan x plus root tan x plus root tan x plus dot 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 up to infinity, and we are asked to show that dy by dx is equals to sec square x divided by 2y minus 1. See, at first we observe that the function looks very complicated, it looks very difficult, and we really don't understand how to find the derivative of such function. But in this case, just in one step you will get a simplified function. Now what that step is, see, squaring both side. अगर मैंने दोनों साइड का स्क्वायर किया, so at the left hand side I'll get y का स्क्वायर कितना? y स्क्वायर, and at the right hand side ये जो सबसे पहला वाला जो स्क्वायर रूट का साइन है ना, वो चला जाएगा आफ्टर स्क्वेयरिंग द राइट हैंड साइड, and we'll just get the term at right hand side as
tan x plus root tan x plus root tan x plus root tan x plus dot 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 up to infinity, which is same as y only. मतलब क्या, राइट हैंड साइड में स्क्वेयर करने के बाद कुछ फर्क नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन कॉल दिस टर्म एज y ओनली. इट मीन्स दैट देखो हमें क्या मिला है, y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू tan x प्लस y. दोनों साइड का स्क्वेयर करने के बाद एक tan x जो है बाहर आ गया, बाकी का टर्म एज इट इज दिख रहा है गिवन y की तरह, सो उसके लिए हम लोग y ही लिखेंगे, इसलिए वी गॉट y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू tan x प्लस y. नाउ लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग इट्स डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y. मतलब देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, सो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वेयर एक्स. dy by dx कॉमन लिया, वी गॉट 2y minus 1 inside the bracket. In the next step we'll shift this 2y minus 1 at the right hand side, it will go in the denominator, so we got dy by dx is equals to sec square x upon 2y minus 1. इस 2y minus 1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसलिए हमें डिजायर्ड आंसर मिल गया. व्हाट द करेक्ट एंड फाइनल आंसर इज dy upon dx is equals to sec square x divided by 2y minus 1. Okay, now this was all about the derivative of implicit function. There are plenty of example in the textbook, you can refer all of them. If you have any query, difficulty, many solved example are there, let me tell you, you can just go through it. And of course I'm going to give you a few examples to solve at home. I'll suggest you to try them at home, and if you have any query, difficulty regarding same, so we are always there to solve it. Now let us start with the next topic, that is derivatives of parametric function. You can observe that on screen, derivatives of parametric functions. Consider the function x is equals to f of t and y is equals to g of t, and these equations may imply a functional relation between variable x and y. Given the value of t in some domain, we can find x and y. It shows that, it tells us that if two different functions equations are given, x is equals to f of t, y is equals to g of t, अगर इन दोनों में कुछ relation है, so these two are called as what, parametric functions. If they have some relation, it is given with the help of simple example. Suppose x is equals to a cos t and y is equals to a sin t we have. Okay, now एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर मतलब ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर टी एंड वाई स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टी. इन दोनों का स्क्वेयर किया और एडिशन अगर किया तो एट लास्ट वी गॉट ए स्क्वेयर विच रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. इट मीन्स दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज टू equations, x is equals to a cos t and y is equals to a sin t. So therefore these two equations are called as parametric functions. Now how to find the derivative of such parametric equations, that we will discuss in next lecture. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरामेट्रिक जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है वो डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू.